Hello everyone and welcome to another video of the FATAFAT revision series. Topic of this video is chemical control and integration, or we can say the endocrine system. So without wasting any time, let's start to practice the MCQs for Neet 2021. So the first question, endocrine glands have dash to carry their secretion to specific organs. So endocrine glands के पास कोई duct नहीं होता है. So correct will be option C, no ducts. Next, chemically hormones are. So chemically hormones can be all of these, that is biogenic amines, proteins and steroids. So सही option है option D, all of these. Next, Ca2 plus यानी कैल्शियम आयंस लेवल इन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय. तो कैल्शियम आयंस का लेवल दो हार्मोन से कंट्रोल होता है. एक है TCT दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है. दिस डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल. एंड दूसरा इज पैराथॉर्मोन दैट इज PTH secreted by parathyroid gland and it increases the calcium level in the blood. So correct will be option D. Both A and B control the calcium ion level in the body. Next question. The hormone which regulates the basal metabolism in our body is secreted by. So basal metabolism is regulated by thyroid hormones, that is thyroxine. So correct is option D, thyroid gland. Agla, the gonadotropic hormones are secreted by. The gonadotropic hormones are LH and FSH and they are secreted by anterior lobe of pituitary. So correct is option A. Next, secretion of progesterone by corpus luteum is initiated by. तो corpus luteum is the Graafian follicle जो rupture हो जाता है उसके बाद ovum release होने के बाद जो भी पार्ट ऑफ फॉलिकल बनता है दैट इज कॉर्पस लूटियम एंड उसमें से प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन इज इनिशिएटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH. सो करेक्ट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द बॉडी सिक्रीट्स द हार्मोन सीक्रेटिन. तो सीक्रेटिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द ब्रूनर्स ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इन द duodenum. So correct is option D, that is duodenum secretes the hormone secretin. Next, adrenaline directly affects. So adrenaline is the fight or flight hormone and it affects directly the heart rate. Heart rate को directly increase करता है. तो it will directly affect the SA node that is the pacemaker of heart जो heart beat को regulate करता है. So correct is option A. Now this can be marked as a star question of the video. Next question. A person having problems with calcium and phosphorus metabolism in his body, which of the following glands may not be functioning properly? So calcium and phosphorus metabolism is controlled by PTH, that is parathormone secreted by the parathyroid gland. So correct will be option D, that parathyroid gland will be not functioning properly. Correct is option D. This can be also marked as a star question of the video. Next question. Blood calcium level is lowered by the deficiency of. तो blood calcium level को increase करता है parathormone that is PTH. और अगर PTH का secretion कम हो जाएगा, उसका deficiency हो जाएगा, तो blood calcium level will fall down. So correct is option C. Next, diabetes insipidus occurs due to the hyposecretion of. तो insipidus that is tasteless यानी ये शुगर वाला डायबिटीज़ नहीं है and it occurs due to hyposecretion or undersecretion of antidiuretic hormone that is ADH, also called as vasopressin. So correct is option D for this question. The source of somatostatin is same as that of. So somatostatin is secreted by the delta cells of islets of Langerhans that is pancreas. और pancreas के islets of Langerhans से insulin and glucagon भी secrete होता है. Glucagon from alpha cells and insulin from beta. So correct is option B. Next question.
द फंक्शन ऑफ पीनियल बॉडी इज टू। तो पीनियल बॉडी का फंक्शन है लाइटनिंग ऑफ स्किन कलर, दिस इज ट्रू, दैट इज पिगमेंटेशन को कंट्रोल करना, पिगमेंटेशन, controlling sexual behavior, regulating the period of puberty. So all of these are the functions of pineal body or pineal gland. So correct is option D, all of these. Next, now comes a very important star question of the video, that select the option that correctly identifies A to E in the given flowchart. Islets of Langerhans pancreas का has two main types of cells. तो A cells secrete insulin, तो insulin secreted by beta cells, तो A will be beta, and insulin causes D, तो insulin blood sugar level को decrease करता है, तो this will be hypoglycemia. and B cells, तो एक बीटा सेल्स हो गया तो दूसरा यहाँ पे अल्फा होगा, अल्फा सेल्स सिक्रीट ग्लूकागॉन एंड ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, तो दिस विल बी हाइपरग्लाइसीमिया. तो यहाँ पे A विल बी बीटा, B will be alpha and C will be glucagon, D is hypoglycemia and E is hyperglycemia. So correct is option D. Next, this is also a star question. Observe the given figures and select the option that correctly identifies A, B, C and D. तो यहाँ पे NCERT का डायग्राम है, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड. तो ये और ये जिसको A से मार्क किया गया है, दीज आर थायराइड ग्लैंड एंड दिस टिश्यू जो A एंड B को मतलब दोनों A को जोड़ रहा है, दोनों थायराइड ग्लैंड को, दैट इज द ईस्थमस एंड C इज द ट्रैकिया और विंड पाइप. एंड ये जो चार डॉट्स है जिसको D से मार्क किया गया है, दीज आर पैराथायराइड ग्लैंड्स. सो करेक्ट इज ऑप्शन B. Next question. Which of the following is incorrect regarding the functions of thyroid hormones? So thyroid hormones, that is thyroxine, and उसका functions है regulation of basal metabolic rate, having calorigenic effect. This is wrong. Calorie burning या calorigenic effect नहीं होता है उसका. Thyroxine supports erythropoiesis. This is true, and diminishes the actions of neurotransmitters. This is also true. So correct will be option number 2. Next question. This is a very nice question क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सा स्टार बना है, आप लोग इसको देख भी सकते हो कि this is a star question. Consider the following symptoms of a disorder. तो यहाँ पे एक disorder है, उसका symptoms दिया है mental retardation, abnormal skin, deaf mutism यानी गूंगा बहरा हो जाना, and stunted growth. तो ये किस चीज़ का symptoms है? Which disorder is correctly described by these symptoms? So this is cretinism. ये जो सारे symptoms है ये cretinism का symptoms है, and cretinism होता है due to hypothyroidism during pregnancy. अगर pregnancy में mother को hypothyroidism हो गया यानी thyroxine का synthesis less हो गया, तब उस बच्चे को cretinism हो सकता है. So correct is option number 4. Next question. This is also a nice question. We can mark it with a star. All the following are symptoms of Addison's disease except. तो Addison's disease होता है corticoids के less secretion की वजह से, corticoids का under production, and corticoids secrete होते हैं adrenal cortex में. तो उसके symptoms क्या क्या हैं? तो increase in urinary Na+, यूरिन में Na+ ज़्यादा हो जाता है, निकलना ज़्यादा हो जाता है, लो ब्लड शुगर, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. ब्रोन्स लाइक पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ये भी होता है एडिसन्स डिजीज़ में, बट हर्सूटिज्म यानी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द बॉडी, ये कोई सिम्टम नहीं है एडिसन्स डिजीज़ का. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म एक्सेप्ट. सो ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोन एंड इंसुलिन, ये तीनों शुगर के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, बट थाइमोसिन ये थाइमस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिक्रीशन ऑफ रेनिन ऑकर्स इन रिस्पॉन्स टू. तो ये RENIN रेनिन, दिस रेनिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम द JG सेल, दैट इज juxtaglomerular cells, and this renin is secreted in response to low glomerular filtration rate.
और ये लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR ये हो सकता है ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर और लो ब्लड वॉल्यूम। तो डिक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर, ये लो ब्लड प्रेशर है, दिस इज ट्रू, इसके रिस्पॉन्स में रेनिन रिलीज होगा। डिक्रीज सोडियम कंसेंट्रेशन इन द ब्लड, इसके रिस्पॉन्स में भी रेनिन रिलीज होगा। इंक्रीज GFR, दिस इज रॉन्ग, डिक्रीज GFR के लिए रेनिन रिलीज होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज ट्रू, that both 1 and 2 are responsible for secretion of renin. Next question. Select the correctly matched pair. Melatonin hastens puberty. This is wrong. Progesterone stimulates follicle maturation. This is also wrong. Follicle maturation progesterone नहीं FSH करवाता है. Growth and maturation of follicles. FSH surge causes ovulation, तो FSH का नहीं, LH surge causes ovulation in females, and LH stimulates testosterone synthesis in males. This is true. LH acts on the Leydig cells and stimulates testosterone synthesis in males. So correct is option number 4. Next question. Which of the following hormone causes release of bile from gallbladder? तो cholecystokinin, that is CCK, this causes release of bile from gallbladder. So correct is option number 1. Next question. Which of the following statement is incorrect regarding ANF, that is atrial natriuretic factor? ANF decreases the blood pressure, this is true. ANF inhibits secretion of renin from kidney, this is also true, feedback mechanism के through ये काम करता है. ANF inhibits ADH secretion from posterior pituitary. This is also true. Antidiuretic hormone यानी vasopressin का भी secretion को ये inhibit करता है. And ANF decreases urine output by decreasing GFR. This is wrong. ANF does not decrease the urine output. So correct is option number 4. Next question. Testis performs dual function by acting as, तो testis dual function perform करता है by acting as endocrine gland producing testosterone और androgen बोल सकते हैं उसको, and acts as a primary sex organ by producing sperms. So correct is option number 4, both 1 and 2. Next question. Leydig cells secrete A under the influence of B. तो Leydig cells secrete करते हैं testosterone in the influence of LH, which is secreted by C. So LH is secreted by anterior pituitary. So A will be testosterone, B will be LH, and C will be anterior pituitary. So correct is option number 3. Next, now this is a nice question. Which of the following serves as a secondary messenger? तो secondary messenger वो substance होते हैं जो जब कोई हार्मोन सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन से आके इंटरैक्ट करता है तो उस इंटरैक्शन की वजह से मैसेंजर्स जनरेट होते हैं जो वो मैसेज को ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द न्यूक्लियस. सो डाई एसाइल ग्लिसरॉल, CGMP, calcium 2+, CAMP and ionositol triphosphate, these all can be the messengers. So correct is option 4, all of the above. Next question. Hormone that inhibits gastric secretions and motility is. So gastric inhibitory peptide also known as GIP ये inhibit करता है gastric secretions को. So correct is option number 3. Next question. Which of the following pair of hormones represent amino acid derivatives? So amino acid derivatives दो hormones होते हैं adrenaline and noradrenaline जिसको epinephrine and norepinephrine भी बोलते हैं. So correct is option number 3. Next, now this is also a star question and last question of the video. Protein hormone that stimulates secretion of water and bicarbonate ions in pancreatic juice is. So secretin is the hormone which acts on pancreas and pancreatic juice में water और bicarbonate ions का secretion को increase करता है. So correct is option number 3. So that's all for the last chapter of class 11, that is endocrine system. All the questions are exclusively from the NCERT book of class 11 and also very important for Neet 2021. Do hit the like button, share my videos with your friends so they can also benefit from it,
And do subscribe to my channel and help the channel to grow. Till the next video comes, take care.